Ladies and gentlemen, this evening on 6 p.m. Prime, the India Today special investigation team brings you this exclusive report that exposes who are profiting out of the ongoing COVID-19 crisis. You're right, there are vultures, those who are in fact making sure that even in this crisis that the entire globe is facing, they only make a few quick bucks. It exposes those who are ensuring that you and your corona warriors, the doctors, the medical professionals, are deprived of safety equipment, especially the N95 masks. They are ensuring that the prices of the N95 masks go through the roof. This is an India Today special investigation team that exposes the mask mafia. As the demand soared, so has the black marketing of facial protection. An India Today investigation has found suppliers selling medical grade N95 masks at a high premium. At Delhi's Wazirpur industrial area, Akul Mittal is a supplier of imported N95s. This is how he gouged our reporter on prices when he visited his office, posing as a retailer. सर रेट का बताइए थोड़ा सा, क्या रेट लगेगा? पहले N95 अभी का क्या रेट है, पहले का क्या था आपका? जब शुरू में इसी को बेच रहे थे? शुरू में जब माल बिकता है ना ये 40-45 रुपए का रेट था। अच्छा। और अभी आप इसको 140? तो मार्केट नेरो के हिसाब से कुछ 100 रुपये बढ़ गया सीधा। 6 रुपए की चीज़ 100 रुपये हो गई। ये तो 40-45 रुपए की आइटम थी। इंडिया में कोरोना आ गया तो सबकी यही डिमांड है, सबको N95 चाहिए। आपने भी तो रेट बढ़ा ही दिया होगा। सर मार्केट के सामने बढ़ाया रेट क्या लगेगा? 140 बढ़ाया आपको, सही बढ़ाया है। बढ़ेगा इस साथ, डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की। तो 5000 N95 का कितना का पड़ेगा? टोटल कितना का होगा? 5000 7 लाख। हाफ रेट का इनवॉइसिंग करा दो और हाफ रेट की वो करा दो और टैक्स आधा लग जाएगा। अच्छा, तो कैश? हाँ दो, इसको मैं बुलाओ दिखा दूँ। मतलब जो मार्क्स 40 रुपये का बिक रहा था आज से 2 हफ्ते पहले, वो 140 में बिक रहा है। You heard Akul Mittal confessing that he would sell the hospital grade masks for more than 3 times the original price. Akul Mittal is not alone. Vijendra is another distributor of masks and air purifiers. At his office in Ghaziabad, he is also price gouging the N95s. N95 सस्ता है? सस्ता नहीं, मतलब आज के डेट में तो सारा चीज है यार दोस्त, सब कुछ ओवर वैल्यूड है, ऑल आर ओवर वैल्यूड। वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनको भी महंगा मिल रहा है, हमें मिल रहा महंगा मिल रहा है। हम ये 15 रुपए से लेना चालू किए हैं, और आज सोचो क्या है स्थिति। तो 2000 पीछे कितना होगा? 2,40,000। 2,40,000। इस पर टैक्स वगैरह नहीं लगेगा कुछ? ये कैश की बात है दोस्त, आपको जो बिल मिलेगा केवल 30,000 का मिलेगा, इससे तो नहीं दे पाएंगे। अच्छा, बाकी कैसी चाहिए? मैंने 40,000 हम दे देंगे आपको उस पे बिल पे, इंक्लूडिंग टैक्स लगा के 2 लाख रुपए कैश चाहिए। वो आ रहा है अभी लेकर के, वही गुरु नानक ये बोला? हाँ, चाह रही है ना इसको। In the old quarters of Delhi, Suman is a wholesale trader of face masks and various other products. She admitted that the price of the N95s have gone through the roof. जैसे गोल्ड का है ना सर, सुबह आपका रेट खुलेगा, क्या रेट है पता नहीं है।
आज का रेट ये है, कल का कुछ नहीं पता। 14 तारीख के बाद लोग सोच रहे हैं कि डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जो 50 और दुकानें खुली है ना, उनको भी तो पता चल जाएगा कि भैया ये सब हो रहा है, तो कौन सस्ते में बेचेगा सर माल। आज के रेट है वो कह रहे हैं मेरे, 14 तारीख के बाद और बुरा हाल हो जाएगा, ये कंफर्म है। दुकानें खुलते ही सबको पता लग जाएगा कि आग लगी पड़ी है, जिसके पास माल होगा वो भी नहीं बेचेगा। कारण यही है ना कि सबको पैसा चाहिए। कितने का पड़ेगा? 290 का लास्ट। किस कंपनी का? ये N95। Let's not feed the price gougers. Let the N95s be saved for the frontliners they so desperately need. For others, homemade masks can be a good choice. A report by Mohammed Hizbullah for India Today's Special Investigation Team. All right, joining me now on the broadcast, News Director, India Today, Rahul Kamal, who is investigation team, the special investigation team has now put out in a series, in fact, investigations, Rahul. This one, very important because we have been hearing from the government and from the doctors as well, the shortages as far as the N95 mask is concerned. And we now know that there are people like what we have exposed today, those who are ensuring that the shortage only increases. Ankit, this is the fifth in a continuing series of exposés done by the India Today Special Investigation Team, the only investigation team that's actually out and about in the middle of this lockdown, and to be able to put out 5 solid investigative stories just during the last 3 weeks is quite commendable. In this story that you just played out to your viewers, Mohammed Hizbullah explores how masks, which are surgical masks and are meant to be used only by medical staff, are retailing at 2.5 times their market price. Masks which are supposed to be sold for 40 rupees being sold for 120. This is sheer exploitation. Remember, this is wrong at various levels. Not just is this black marketing, but you're also taking away from those medical workers, frontline staff who could potentially need this more, selling it to people who just want it as a backup instead of making. Remember, the Prime Minister has been emphasizing on this, as has the World Health Organization and the Center for Disease Control. They've all been saying, make your own masks, do your own masks. Instead of that, you've got over here a situation where these retailers are trying to make a killing, and this is what's the common thread across all our investigations, whether it was the ventilator vultures, whether it was masks being made in pathetic conditions, totally unhygienic conditions. People are using this lockdown and this crisis as a money-making racket. What I do know is that at the highest levels of the Indian government, the Prime Minister himself and his team have looked at some of our investigative reports and have ordered immediate action to be taken against those who are indulging in profiteering, and past investigations are being looked at very carefully, not just against those we expose, but also to ensure that this doesn't go on. Rahul, may I request you to stay on with me, because we are also being joined by Health Minister Delhi, Satyendra Jain, an important investigation which we have put out. Satyendra Jain साहब, first of all, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमने जो अभी एक इन्वेस्टिगेशन करी है, राहुल भी अभी उसी के बारे में बता रहे थे, N95 मास्क की वैसे ही कमी है, हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ये मास्क चाहिए, और हमारी इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल साफ है, हमने दिल्ली के अंदर ऐसे 2 कम से कम ऐसे डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को उजागर किया है जो मास्क का दाम बढ़ाकर दे रहे हैं, उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने रखे हुए अपने पास पैसे बनाने के लिए मास्क रखे हुए अपने पास। देखिएगा, मैं ये कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने अपने पास मास्क रखे हुए हैं, जो उसकी कालाबाजारी करने के लिए, होर्डिंग करने के लिए, ज्यादा दाम पर बेचने के लिए रखे हुए हैं, तो इनको बख्शा नहीं जाएगा। जैसे ही आपने दिखाया टीवी के ऊपर, आप लोगों से इनके थोड़ा डिटेल्स लेके इनको सारे के सारे लोगों को पकड़ा जाएगा, उनको किसी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। होर्डिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। और N95 मास्क तो जैसा आपने बताया कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो है उनकी जरूरत है। घर में जो रहने वाले हैं वो तो 3 लेयर मास्क भी चलेगा, या कोई कपड़े का मास्क बना लेते वो भी चल जाएगा। N95 मास्क तो हमारे हॉस्पिटल्स के लिए बहुत ज्यादा चाहिए। तो दैट इज मतलब एक तरह से स्केयर कमोडिटी आज की डेट में, उसकी होर्डिंग या उसको कहते हैं ऐसे इस तरह से वेस्ट करना, वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट है जैन साहब, अब N95 मास्क उसके अंदर आता है, उसमें भी प्रावधान है इनके खिलाफ कार्रवाई करने का।
तो क्या हम उम्मीद करें कि दिल्ली सरकार जल्द से जल्द इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगी? बिल्कुल जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। अभी मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा बहुत जो भी डिटेल आप दे सकते हैं वो आप हमारे पास भेज दीजिएगा, ताकि इनको पकड़ना थोड़ा आसान रहे, कि जो एड्रेस है या जो भी डिटेल्स इनकी आपके पास अवेलेबल है आप दे दीजिएगा। सर, जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि दिल्ली में फिलहाल पर्याप्त हैं N95 मास्क और जो बाकी PPE किट्स हैं डॉक्टर्स और हेल्थ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए? देखो, पर्याप्त नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमारे पास जो स्टॉक है वो दैट इज एनफ फॉर ए वीक और सो, हफ्ते 10 दिन का स्टॉक है, पर इससे काम चलने वाला नहीं है। हमें देखिएगा जो PPE किट्स हैं वो लगभग 20,000 हमारे स्टॉक में है, कम से कम 50,000 तो स्टॉक में होने की तभी तसल्ली होगी कि हाँ जी आपके पास है। ऐसे N95 हमारे पास 40-50,000 होंगे, वो भी कम से कम 2 लाख तो होने चाहिए, उससे कम पे तसल्ली नहीं हो सकती। और ये नहीं कह सकते कि वी हैव सफिशिएंट स्टॉक है, परंतु सफिशिएंट नहीं कह सकते। सर, वी विल गिव यू ऑल द डिटेल्स, जो भी डिटेल्स हमारे इस इन्वेस्टिगेशन की हैं वो हम आपके तक पहुंचाएंगे, बिकॉज एज यू आर सेइंग दिल्ली में भी अभी जरूरत है और N95 मास्क की। होपफुली इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी एंड दिस इज गोइंग टू सर्व एन एग्जांपल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, सत्येंद्र जैन, हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली, ऑन दिस। Rahul, we just got this breaking news from the health minister. He's now saying that in Delhi as well they are looking for more N95 masks, and this is now going to be a big investigation which is going to be followed up by the government of Delhi as well. You know, you're absolutely true, and to the credit of the Aam Aadmi Party government in the national capital, they've been on the ball. Whether it was the madrasa hotspots or the ventilators investigation, Arvind Kejriwal has been listening in and using the reports that we've been putting out on India Today Television and on Aaj Tak as the basis to initiate action, sharing that with his team, which is quite commendable. So it's not as if they're tone deaf to all of what's being exposed. They're monitoring what's coming out in the media and doing what they can to try and prevent this from happening. And punitive action, Ankit, is very important because it ensures that there is a certain deterrence. That message goes out to those who are indulging in this wrongdoing now that they're exposed on national television, and others, if they're trying to pull off a stunt like this, are more careful about it in future. Rahul Kamal, thank you so much for joining us and the special investigation team, in fact, putting out this big expose. You heard the health minister as well of Delhi, who has in fact asked us to provide all details. We'll be doing that as soon as possible. And of course, action needs to be taken against all these mass mafia, the vultures, those who are in fact trying to deprive our frontline health workers of the very essential equipment. I just want once again for all of you to just take a look at these people, 3 of them that we have exposed here in this investigation, talking how casually, as it's just business, normal business going on, trying to make killing profits, 250% profit on the essential N95 mask. Listen into them. सर, रेट का बताइए थोड़ा सा, क्या रेट लगेगा? पहले ये N95 अभी का क्या रेट है, पहले का क्या था आपका? जब शुरू में इसी को बेच रहे थे? शुरू में जब माल बिकता है ना ये 40-45 रुपये का रेट था। अच्छा, और अभी आप इसको 140? तो मार्केट नैरो के हिसाब से कुछ 100 रुपये बढ़ गया सीधा। 6 रुपये की चीज़ 100 रुपये हो गई। ये तो 40-45 रुपये की आइटम थी। इंडिया में कोरोना आ गया तो सबकी यही डिमांड है, सबको N95 चाहिए। आपने भी तो रेट बढ़ा ही दिया होगा सर, मार्केट के सामने बढ़ाया रेट क्या लगेगा? 140 बढ़ाया आपको, सही बढ़ाया है, बढ़ेगा ही सर, डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की। तो 5,000 N95 का कितना का पड़ेगा, टोटल कितना का होगा? 5,000 7 लाख। हाफ रेट का इन्वॉइसिंग करा दो और हाफ रेट की वो करा दो, टैक्स आधा लग जाएगा। अच्छा, तो कैश? हाँ। N95 सस्ता है? सस्ता नहीं, मतलब आज के डेट में तो सारा चीज है यार दोस्त, सब कुछ ओवर वैल्यूड है, ऑल आर ओवर वैल्यूड। लोग प्रॉफिट कमा रहे, उनको भी महंगा मिल रहा, हमें मिल रहा महंगा मिल रहा। हम ये 15 रुपए से लेना चालू किए हैं, और आज सोचो क्या है स्थिति। तो 2,000 पीछे कितना होगा? 2,40,000। 2,40,000। इस पर टैक्स वगैरह नहीं लगेगा कुछ? ये कैश की बात है दोस्त, आपको जो बिल मिलेगा केवल 30,000 का मिलेगा, इससे तो नहीं दे पाएंगे। अच्छा, बाकी कैसे चाहिए? मैंने 40,000 हम दे देंगे आपको उस पे बिल पे, इंक्लूडिंग टैक्स लगा के 2 लाख रुपए कैश। जैसे गोल्ड का है ना सर, सुबह आपका रेट खुलेगा, आज क्या रेट है पता नहीं है, आज का रेट जो है ये है, कल का कुछ नहीं पता। 14 तारीख के बाद लोग सोच रहे हैं कि डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा।
क्योंकि जो 50 और दुकानें खुली है ना, उनको भी तो पता चल जाएगा कि भैया ये सब हो रहा है, तो कौन सस्ते में बेचेगा सर माल। आज के रेट है वो कह रहे हैं मेरे 14 तारीख के बाद और बुरा हाल हो जाएगा, ये कंफर्म है। दुकानें खुलते ही सबको पता लग जाएगा कि आग लगी पड़ी है, जिसके पास माल होगा वो भी नहीं बेचेगा। कारण यही है ना कि सबको पैसा चाहिए। कितने का पड़ेगा? 290 का लास्ट। किस कंपनी का है? ये N95। Anand Patel, my colleague, is also joining us. He has been tracking, in fact, throughout the shortages that we are facing on the PPEs and the masks as well. Anand, this is an eye-opener. I mean, while the government is talking about exporting PPEs, exporting masks, there are people within our own country, those who are making petty profit even at the time of crisis. Yes. Yes, absolutely, Ankit. This is an eye-opener, must be for the governments and the agencies, because the masks, particularly the N95 masks we've exposed here, how they've been black marketed, are a must for the ICU staff. Now, in the third week of March, the government of India had ordered 40 lakh N95 masks. And now, with the state governments going in, declaring that the wearing a mask is mandatory, one can imagine the number of masks required by the masses to fight this pandemic. So clearly, these people, these sharks, I would call them, are cashing in upon the requirement of the common man to fight this battle. And also, this surge in demand has led to the mushrooming of cottage industries of these masks without any standards. Now, once the lockdown was declared, the government had moved in swiftly and capped the prices of the surgical masks at rupees 8 and 10 for 2 and 3 ply surgical masks, and 16 rupees for the 3 ply melt blown mask. But the price for the N95 mask has not been fixed so far, not been capped so far, for the reason best known to the government of India. That is one. And also, the standards are not clear. What are the standards of these masks? They don't have to follow any standards. They don't need any BIS standards to sell them in the open market. They don't come under the Drug Controls Act. So that gives them a lot of space to play upon what the product they are trying to sell. Anand, thank you for joining us with all those details. Anand giving us specific details of the government also, in fact, ordering 40 lakh masks. And remember, even at this time, there are these people, those who are black marketing it, making sure that even at this point of time, they make profit out of the crisis. Now, very quickly, because a lot of people have been talking about and may not possibly understand what an N95 mask is, because everybody these days is just talking about mask and how important, in fact, it is to wear the mask. Let's very quickly just tell you what are the different kinds of masks that are available and what do these masks do. N95 respirator mask filters out 95% of these small particles. It's extremely important, as our colleagues were telling us, for health workers, for professionals, those who are in fact working in the ICUs and are in direct touch with the coronavirus patients. It's to be worn by the medical professionals. Now that surgical mask, the one that you see, the blue 3-ply surgical mask, protects only from larger particles. So it is not as effective as the N95 mask, but it is need to be worn by healthcare workers only. You and I don't need to wear even the surgical mask when we go out. It can be used by everyone. That is the cloth mask. So make your own mask. We have put out many videos on that as well. This can give you enough protection if social distancing is followed, because remember, it's not, the coronavirus yet is not being seen as something which is transmitting through air. It is if somebody sneezes, somebody coughs, and to a 6 feet distance, if you are in that area, you can in fact contract that. So if you are protected even by a gamcha or a handkerchief, you will be okay if you are maintaining social distancing. Let's also very quickly, in fact, give you a sense of how it's important, whatever type of mask that you're wearing, how to properly wear a mask. Ensure that your mouth and nose are covered. If your nose is not covered, your mouth is half open, you're trying to speak, whatever, it won't in fact be effective. Do not touch your mask while you're wearing it. So stop touching your mask, especially the front area where the germs could be and virus could be accumulated. Wash your hands before and after using a mask. When you take it out from the sides, and then wear it from the sides and wash your hands. Avoid fidgeting with
or readjusting mask at regular intervals. That is why you can only wear, you could just tie around a handkerchief. It will be easy. Remove it using the loops around your ears, and then once again wash your hands. Do not touch your mouth or your nose while removing the mask, or even after removing the mask. Don't touch your face before washing your hands. These are few important steps that you need to keep in mind. Before, in fact, I move on to the other story, I just also want to tell you that masks right now have been made compulsory if you are going out in public in 11 states of the country. Maharashtra, Uttar Pradesh, Delhi, Madhya Pradesh, all these states have made it compulsory. Odisha, Haryana, Uttarakhand, West Bengal has also made mask compulsory. Telangana, Karnataka, Nagaland have also made wearing of the mask compulsory at this point of time. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.